morning, students. Today we are going to start the next topic that comes under scientific management. Earlier we have discussed the principles of scientific management as given by F.W. Taylor. Today we are going to discuss the techniques of scientific management given by F.W. Taylor, Frederick Mason Taylor. Students, there are 7 techniques given by Frederick Mason Taylor. These techniques are based on scientific methods कि किस तरीके से scientifically work करना चाहिए कंपनी के अंदर. Right, students? So let's discuss one by one the techniques of scientific management as propounded by Frederick Winslow Taylor. The very first is, students, functional foremanship. Now under functional foremanship there are 8 foremen which are going to give a command, which are going to give a work to a workman in different situations, in different times. Right, students? So let's discuss. This is supposed to be the factory manager. Under factory manager, there are 2 in charges, that is planning in charge and production in charge. Right, students? So under planning in charge, there are 4 foremen, and under production in charge, there are another 4 foremen. Total, there are 8 foremen, those who are giving command at a different times to a single workman. Right, students? Students, under functional foremanship, F.W. टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि एक फोरमैन अकेले सारा काम नहीं कर सकता, या एक फोरमैन के पास सारा काम अकेले कमांडेबल नहीं हो सकता. He is not at all a master in all the field. So under functional foremanship, Taylor suggested that there must be at least 8 foremen who can give the work in a different time to a single workman. Right, students? So let's discuss this. Taylor suggested that one foreman is not an expert of work. So each work should be supervised by a number of foremen who are specialists of their field. This technique is an extension of principle of division of work. Right, students? This technique is an extension principle of division of work as given by Henry Fayol. Right, student? And it aims to improve the quality of supervision at shop floor level. As I told you earlier, Henry Fayol principle, they are based on top level management or administrative level. Frederick Winslow Taylor principles and techniques, they are based on shop floor level, or it increases the productivity. Right, students? Supervision at shop floor level by putting a worker under 8 specialists. Right, students? So let's discuss this diagram that comes under functional foremanship. Students, there is a factory manager. Right, students? So factory manager gives command to planning in charge and production in charge. Right, students? So under planning in charge, there are 4 foremen: instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, and disciplinarian. Now under production in charge, it consists of another 4 foremen: speed boss, gang boss, repair boss, and inspector. Right, students? These 8 foremen give a work to a workman under different times. Right, students? So let's discuss this. बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होगा बेटा? तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बेटा स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बेटा ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स. ये बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वर्क ड्राफ्ट करेगा. रूट क्लर्क का क्या काम होता है बेटा? रूट क्लर्क स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन, स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन. सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है बेटा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करेगा. रूट क्लर्क स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन, रूट क्लर्क स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट कि हर एक वर्कर को कितना टाइम लग रहा है काम पूरा करने में. डिसिप्लिनरियन, डिसिप्लिनरियन ensure discipline in the working environment. वो डिसिप्लिन दिखेगा कि वर्किंग एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन है या नहीं. Right, students? So under planning in charge, there are 4 foremen who are giving work in different times to a workman. Now come to production in charge. तो production in charge में बेटा पहला आएगा speed boss. Speed boss का क्या काम होता है? Timely and accurate completion of job. Speed boss का मेन काम ये होगा कि वो दिखेगा कि timely and accurately completion of job. Now come to the gang boss. Gang boss का मेन काम क्या होगा? The work of a gang boss is keeping machines and tools etc. ready for operation by workers. Gang boss का मेन स्टूडेंट्स काम ये होगा कि वो machines tools ready रखेगा for the workers. Repair boss. Now come to repair boss, students.
रिपेयर पॉज का क्या काम होगा टुवर्ड्स वर्कर्स? रिपेयर पॉज ensuring proper working conditions of machines and tools. Ensuring proper working conditions of machines and tools. So इंस्पेक्टर का क्या काम होगा स्टूडेंट्स? चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क, राइट स्टूडेंट्स, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क, ये बेटा मेन काम होगा किसका? इंस्पेक्टर का, राइट स्टूडेंट्स। आई होप ये अलग अलग काम है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग टाइम में वर्कर को, वर्कमैन को दिए जाएंगे जिससे कि वो एक जगह ढंग से काम कर पाए। सो दिस इज सपोज टू बी व्हाट? फंक्शनल फोरमैनशिप। सो फैक्ट्री मैनेजर कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर बेटा 4 फोरमैन आएंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर बेटा 4 आएंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और दीज आर द 8 फोरमैन, राइट, जिसके अंडर में वर्कर्स आएंगे और वर्कर्स को ये लोग अलग अलग टाइम पर काम देंगे, राइट स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। Now come to the second one, standardization and simplification of work. Now what do you mean by standardization and simplification of work? The standardization का मतलब होता है giving proper standards in raw material, in production environment, proper heating, ventilation, lighting, right? वर्क को समझाने का एक proper standard method होना चाहिए। तो standardization refers to the process of setting standards for every business activity, right students, by using standardized equipments, materials, production methods, etc. Right students. Similarly, working conditions, that is temperature, lighting, ventilation, etc. should be standardized, right? So this is known as standardization of work. Standardization of work का मतलब students ये होता है to give proper standards to the workers, right students. All the techniques are based on workers level. All the techniques are based on lower level management, because the main function of FW Taylor, the main emphasis of FW Taylor is to increase the productivity or to encourage the shop floor level. That comes under lower level management, right students. So standardization refers to the process of setting standards for every business activity by using standardized equipments, material, production methods, etc. Similarly, the working conditions, that is temperature, lighting, ventilation, etc. should also be standardized. I hope standardization is very much clear to you. Now what do you mean by simplification of work? बेटा simplification का मतलब होता है, the word simplification means, simplification का मतलब होता है कि by eliminating unnecessary varieties of products, by eliminating unnecessary varieties of products. Let's take an example. There is one paper manufacturing company who produce 100 varieties of paper in a country. 100 varieties of paper वो बेच रही है, लेकिन at the end it has been noted that the quality of the work has suffered, the sales is declining, right students, and the goal target profit is not achieved, right students. अब उसने क्या किया student? Afterwards उसने क्या किया? He eliminates the varieties from 100 to 20. He eliminates the varieties from 100 to 20. अब हुआ क्या स्टूडेंट्स? जब वो 100 वेराइटीज के पहले पेपर बना रहे थे, वो अब उन्होंने रिड्यूस करके अपने 20 वेराइटीज पे लिया है। तो देयर आर 3 थिंग्स, 3 पॉजिटिव चीजें हुई। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली पॉजिटिव चीज क्या हुई स्टूडेंट? पहली पॉजिटिव चीज स्टूडेंट ये हुई कि द क्वालिटी ऑफ वर्क विल इंप्रूव, गोल टारगेट विल बी अचीव्ड ऑन टाइम, एंड ऑफ कोर्स बेटा जी इसमें सेल्स इंक्रीज होगी। सो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग अननेसेसरी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द organization. So let's discuss. Simplification means to reducing the unnecessary varieties, sizes and grades of the products manufactured by the organization. It helps in improving the quality and reduction of cost. Improving quality and reduction of cost. I hope second technique is very much clear to you. The very first technique is functional foremanship. Under functional foremanship, this is supposed to be the diagram you have to make, right students. Functional foremanship technique ये कहती है there must be at least 8 specialists who give guidance to a workman for completing their work on time and with better quality, right students. Second is standardization and simplification of work. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन देना, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स देना, टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, प्रॉपर टेम्परेचर, हीटिंग, वेंटिलेशन, लाइटिंग देना वर्कर्स को। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बाय रिड्यूसिंग द अननेसेसरी वैरायटी, साइजेस, ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स।
I hope this is very much clear to you students. Let स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक आपके माइंड में बात आई होगी कि सर देयर इज वन प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में सर आपने हमें बताया था कि एक वर्कर के ऊपर एक ही स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अगर एक वर्कर के ऊपर कई सारे स्पेशलिस्ट होंगे तो ये वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका काम पहले करूं। राइट स्टूडेंट्स, सो the concept of unity of command is not at all followed under F.W. Taylor principles and techniques. Right students, unity of command is applicable to Henry Fayol principles of management, where it is not at all applicable to Frederick Winslow Taylor principles and Frederick Winslow Taylor techniques. I hope this is very much clear to you. Right students, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे बेटा, ये सब लोग एक ही बार में काम नहीं दे रहे हैं। पहले एक देगा, फिर दूसरा देगा, फिर तीसरा देगा, फिर चौथा देगा, एंड सो ऑन। These 8 specialists give work to a particular worker or to a particular workman, right student, in a series of time, not at one time. Now come to the third is work study. Work study के अंदर students 4 आते हैं, right students, that is fatigue study, method study, time study और motion study. Right students, so work study consists of fatigue study, method study, time study and motion study. In several books इनको बेटा अलग से कैटेगराइज भी किया गया। Therefore earlier I said कि Frederick Winslow Taylor given 4 principles and 7 techniques. Right students, so let's discuss one by one. Fatigue study, बेटा एक वर्कर थक जाएगा अगर हम उससे लगातार काम करवाएंगे without rest interval. A worker or a person is bound to feel tired if he works without rest interval for a long period of time. Fatigue study techniques suggest that a worker or a person working in a company must be given a rest interval. So in a rest interval, he gain the stamina, he regain the stamina, and after the rest interval, he starts with the same capacity, or he starts with the encouraging capacity, or he starts with the good capacity. So this is the concept of fatigue study. Right students, suppose take an example, there are 3 shifts in a company. Right students, so fatigue, as per the technique of fatigue study, the workers are appointed for first shift and third shift. Number of workers are appointed first for first shift and third shift, because students कि अगर वो फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में अगर लगातार काम कर लेंगे तो वो थक जाएंगे वर्कर्स, और वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे वर्क अपना सेम कैपेसिटी से। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो लेजी हो जाएंगे। सो इट इज एडवाइजेबल फॉर द मैनेजमेंट कि अगर वर्कर्स 2 शिफ्ट में काम करना चाहते हैं तो गिव देम द फर्स्ट शिफ्ट एंड गिव देम द थर्ड शिफ्ट। Right students, that is supposed to be an example that comes under fatigue study. So let's discuss. It refers to determining the amount and frequency of rest interval required in completing a task. It must be noted that fatigue study is important to avoid accidents and industrial sickness. This will result in increase in productivity. Example, if there are 3 shifts of work, right students, if after one shift workers get tired, he can be assigned first and third shift and given a rest interval in second shift. I hope this study is very much clear to you. Now come to the another one, that is known as method study. Method study, simple student. Method study means, under method study techniques, either a company should go for a capital intensive or a company should go for labor intensive. There are 2 types for working in a company, right students. कैपिटल इंटेंसिव में मशीन ज्यादा होती है और लेबर कम होती है, और लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा होती है, मशीन कम होती है। राइट स्टूडेंट, मेथड स्टडी में मेथड स्टडी टेक्निक्स सजेस्ट दैट कि कंपनी को कौन सा मेथड अपनाना चाहिए फॉर प्रोडक्शन, फॉर वर्किंग। राइट स्टूडेंट्स, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो मशीन से अपने शूज बनवाती है द कॉस्ट इज डिफरेंट, अगर वो लेबर से शूज बनवाती है द कॉस्ट इज डिफरेंट, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी मैनेजमेंट नाउ whether a company should go for labor intensive for manufacturing shoes or a company should go for capital intensive for manufacturing shoes. लेकिन that has been decided, ये तय है स्टूडेंट्स कि लेबर इंटेंसिव से जो कॉस्ट है वो अलग आएगी और कैपिटल इंटेंसिव से जो शूज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अलग आएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, either a company should go for labor intensive or a company should go for
capital T's. So let's discuss student method study. This study is conducted to find out the best method or way of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization. Taylor suggested that method of production should not be decided by rule of thumb methods, but all the methods should be tried in organizations and the one which brings maximum benefit with minimum cost should be selected. Right, students? Maximum benefit with minimum cost method should be selected. Right? The method should not be go to rule of thumb method. As I told you earlier in FW Taylor first principle science, not rule of thumb. Rule of thumb का मतलब होता है कि आप ट्रायल एरर और हिट मेथड से आप कोई भी काम करते हैं. There must be systematic, scientific and logical way of doing the work in a company as propounded by FW Taylor techniques, as propounded by FW Taylor principles. I hope method study is very much clear to you. Now next is time study. स्टूडेंट्स अंडर द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी की टेक्निक में हमें ये पता लगता है कि एक वर्कर और एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में टाइम स्टडी हमें बताती है बेटा. टाइम स्टडी मींस हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय अ वर्कर टू कंप्लीट द वर्क. नेचुरल सी बात है स्टूडेंट्स, इफ अ वर्कर ट्राई टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम और बिफोर टाइम ही इज सेड टू बी एफिशिएंट. इफ अ वर्कर कंप्लीट्स आफ्टर द टाइम, आफ्टर द गिवन टाइम, then the worker is inefficient. With the help of stopwatch, supervisor notes down the time taken by each worker. Right students, let's take an example. एक कंपनी है, वहां पर जो सुपरवाइजर ने उसने ये डिसाइड किया है, right students, आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन और आफ्टर सर्वे या आफ्टर गोइंग थ्रू द डिसीजंस कि 100 पेन्स को बनाने में स्टूडेंट्स 2 आवर्स लगते हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो सबको 100 पेन्स बनाने के लिए दे दिए. Right, and with the help of stopwatch now supervisor notes down the time. जो बेटा 2 आवर्स के अंदर 100 पेन्स बना लेंगे he is said to be efficient worker. जो 2 आवर्स से पहले भी 100 पेन्स बना लेंगे of course they are also said to be efficient workers. लेकिन जो 2 आवर्स के बाद 100 पेन्स बनाएंगे, right students, that is the standard time, so they are said to be inefficient workers. So in time study the efficient and inefficient worker are to be judged and selected. So let's discuss time study. In time study, the ability and skill of a worker is selected. It is a technique used to measure the time that may be taken by the worker to perform various tasks in a job. The objective of time study is to determine standard time required for a well-defined job. Standard time required for a well-defined job. To determine fair day's work, to determine number of workers required, and to determine efficient and inefficient workers. Right students, and make suitable incentive schemes. Right students, so I repeat, time study. In time study, the ability and skill of a worker is selected. It is a technique used to measure the time that may be taken by the worker to perform various tasks in a job. The objective of time study is to determine standard time required for a well-defined job, to determine fair day's work, to determine number of workers required, and to determine efficient and inefficient workers and make suitable incentives. Right students, now come to motion study. Avoid wasteful motion. फिजिकल काम कम, मेंटल काम ज्यादा. दिस टेक्निक्स, ये टेक्निक्स ये सजेस्ट करती है स्टूडेंट की अ वर्कर शुड नॉट बी मूव फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली. जितनी जल्दी जल्दी मूवमेंट करेगा वो फॉर सर्चिंग अ टूल, फॉर सर्चिंग अ फायर, फॉर सर्चिंग अदर प्रोडक्ट्स, राइट स्टूडेंट्स, तो उतना ही वो थक जाएगा. एक फिजिकल थकान बेटा हमारे मेंटल थकान के ऊपर हावी होती है. तो दिस टेक्निक सजेस्ट दैट वर्कर शुड नॉट बी मूव फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली. उसको एक जगह बिठाकर सारी चीजें दे दो. राइट स्टूडेंट्स, एक ही जगह पर इन अ प्रोडक्शन रूम, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन अ प्रोडक्शन रूम पे उसको टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ऑल द नेसेसरी थिंग्स उसको वहीं पर ही मिल जाने चाहिए. जितने ही बेटा वो मोशंस कम लेगा, जितना ही बेटा वो फिजिकली कम हिलेगा, जितना ही वो फिजिकली अप एंड डाउन कम करेगा, उतना ही अच्छा काम कर पाएगा एक जगह बैठकर. राइट स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट मोशन स्टडी. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक मोशन स्टडी. It refers to study of movements like lifting, putting objects,
sitting, and changing position, etc., which are undertaken while doing a job. It helps save time and increase the production. It improves workers' performance by reducing unproductive movements. It has been observed that worker has to move frequently from taking tool from toolbox, and such unnecessary movements can be avoided by keeping the toolbox near the workers. Right students, इसका मेन एम इस टेक्निक का ये है, अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी स्टूडेंट्स, कि सारी चीजें वहीं पर ही प्रोवाइड कर दी जाए जिससे कि वो लिफ्टिंग मूवमेंट्स कम हो. जितने लिफ्टिंग मूवमेंट मोशंस फिजिकल मोशंस कम होंगे उतना एक जगह बैठ के वो काम कर पाएगा. राइट स्टूडेंट्स, सो और कंपनी का गोल टारगेट प्रॉफिट टाइम पर अचीव होता है. दिस इज द टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी. I hope it is very much clear to you. Now the last technique is differential piece wedge system. Right student, this is supposed to be the important techniques that comes under scientific management. Right students, differential piece wedge technique students ये कहता है this technique is the strongest motivator for a worker. Right students, this is technique supposed to be the strongest motivator for a worker. Differential piece wedge system बेटा कंपनी को अपनी सैलरी देने के लिए दो तरीके होते हैं. Either a company should go for time wage or a company should go for piece wage. Time wage क्या, मंथली सैलरी फिक्स्ड है. पीस वेज में जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे उतने पैसे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने होंगे उतने पैसे होंगे. दैट कम्स अंडर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. दिस टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर द वर्कर्स टू रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस because in this techniques incentives is directly linked with productivity. Incentives is directly linked with productivity. The main objective of fixing two rates is differentiate, right student, efficient and inefficient workers and suitably rewarded the efficient workers. Standard output is fixed through the time and motion state. Right student, standard output fix हो जाता है. तो let's take an example बेटा. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि कंपनी किस तरीके से अपने वेज पेमेंट देती है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स का पता लगाती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा. यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट्स पर डे. 10 यूनिट बनानी है एक दिन में. राइट स्टूडेंट्स, और रेट है 50 यूनिट्स पर डे. अब यहाँ पर थ्री कैटेगरीज लेते हैं वर्कर्स की. वर्कर्स की बेटा पहली कैटेगरी क्या है, वर्कर्स प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स मस्ट बी पेड 500. राइट स्टूडेंट्स, जिसने 10 यूनिट बनाई है उसको 500 के हिसाब से मिल जाएगा. स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आउटपुट. राइट स्टूडेंट्स, वर्कर प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स मस्ट बी पेड 12 into 60, that is rupees 720. Higher output, workers produce 8 unit must be paid 8 into 40, that is rupees 320. Lower output. Right students, I hope this is very much clear to you. Lower rate because the workers who is producing less than the standard rate is rupees 40 per unit. Right students, I hope this is very much clear to you. If you find any difficulty